Dear students, in this video on properties of bulk matter, we will study elasticity, Hooke's law, Young's modulus, bulk modulus, modulus of rigidity, stress strain curve with some numerical problems. So let us begin with the concept of elasticity. The tendency of a body to regain its original shape or size after removal of deforming forces is called elasticity. So, अगर आपके पास कोई भी बॉडी है किसी भी शेप और साइज़ की और उसको आप डिफॉर्म कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के या किसी भी तरीके से यू हैव अ वायर और अ रबर बैंड, उसको आप फोर्स लगा के उसको डिफॉर्म कर रहे हैं, तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में या ओरिजिनल लेंथ में आ जाती है. दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. एंड देन अनदर थिंग, it is plasticity. Now, when a body does not try to regain its original shape or size after removal of deforming forces, then this property is called plasticity. So, supposing कि आपके पास कोई clay है, उसको किसी भी shape में आपने डाल दिया तो वो वापस अपनी shape में नहीं आता है. So, this tendency is called plasticity. And no substance is 100% elastic or plastic. क्वार्ट्ज और आइवरी बॉल्स ये ऐसे हैं जैसे कि हार्ड बॉल्स हैं. दे कैन बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटली इलास्टिक, नियरली 100% इलास्टिक. एंड वैक्स क्ले कैन बी ट्रीटेड एज नियरली कम्प्लीटली प्लास्टिक. So let us talk about stress. Now, when a deforming force is applied on a body, a restoring force within the body opposes it. This restoring force per unit area is called stress. Okay? So, कोई भी अगर बॉडी है whatever shape और size, इसको अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो इसको अपोज करने के लिए इंटरनल फोर्सेस लगते हैं. These internal forces per unit area is called stress. Similarly, supposing you have a long wire और इसको आप नीचे से इसको पुल करके इसकी लेंथ बढ़ाना चाहेंगे तो इसके अंदर एक रेस्टोरिंग फोर्स होगा जो इसकी लेंथ को वापस लाना चाहता है. So that restoring force per unit surface area will be called stress. So, stress is restoring force per unit area, and its SI unit. Force is Newton, area per meter square, so Newton per meter square. And this is also pressure, and its SI unit, another name is Pascal, symbol is PA. So Newton per meter square or Pascal, and this is a scalar quantity. Now, types of stress. Stress can be of various types. First one, let us talk about normal stress. Now, for normal stress, the deforming force acts normally on the surface of the body. So, कोई भी body के अगर normal आपने force लगाया है, so that is called normal stress. You can have a flat surface, like you can have a flat surface, and on this flat surface you can apply force like this. So surface के अगर normal या perpendicular force है तो वो normal stress देगा. And then we have two types of normal stress: tensile stress and compressive stress. So let us talk about tensile stress. Now, tensile stress is produced in long wires. So, supposing we have a long wire and its area of cross section is A, you can see, and some external force is applied on it. आप इस वायर के इस एरिया पर फोर्स F लगाकर इसको पुल करने की या एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं.
and because of this, an internal force will come into play. And in equilibrium, when this wire is in equilibrium, then this internal restoring force and external applied force will be equal. So internal or external forces equal होंगे. So the tensile stress is restoring force upon area, and this restoring force is normal to the surface, so it is normal stress. So restoring force is also equal to applied force, so applied force upon area. So this is tensile stress applicable to long wires or rods only. Now compressive stress. Now supposing we have a body with large area. So like supposing we have a ball dipped inside a liquid, as you can see here. The ball is dipped inside a liquid और liquid पर है, तो इस पर सब डायरेक्शन से, इस लिक्विड पर सब डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है. एज यू कैन सी, फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस ऑन दिस लिक्विड, और these forces are normal to the surface of this ball. So this is normal stress. Compress कर रहा है, so compressive stress, and this because of this there will be restoring force inside it. So that restoring force will be equal to external applied force in equilibrium position. So now the compressive stress will be applied force upon area, and that will be equal to the pressure. See, pressure is force per unit area, you know that. And now tangential stress, and tangential stress is here the deforming force acts tangentially to the surface. यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स जो है सरफेस के टेंजेंशियल होता है. अभी तक आपने ये देखे यहाँ भी और यहाँ भी डिफॉर्मिंग फोर्स जो है सरफेस के नॉर्मल है. सो लेट अस सी हाउ इट इज. सपोजिंग वी हैव दिस बॉक्स एंड इट्स टॉप सरफेस इज ए, द टॉप सरफेस एरिया इज ए, और यहाँ पर इस टॉप सरफेस के टेंजेंशियल एक हमने फोर्स लगाया है. देन यू कैन सी दिस. नाउ this tangential force per unit area is called tangential stress. And now let's see strain. Now when a stress acts on a body, the body undergoes strain. There will be change in size. किसी की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, या वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, तो देयर विल बी चेंज इन साइज और चेंज इन शेप. सो द स्ट्रेन इज चेंज इन साइज अपॉन ओरिजिनल साइज. एंड इफ फॉर अ लॉन्ग वायर द चेंज इन लेंथ विल बी quite a large. For a baki, if you look at it, say it is a long wire, so when you apply external force, its length increases, but there will not be much change in the width. So we consider only the length, and just see what if the original length is L और फोर्स लगाने पर इसकी लेंथ में इंक्रीज हो गया डेल्टा L, then the original, this is increase in length upon the original length, becomes its longitudinal strain. So change in sizes, change in length upon original sizes, original length, it is called longitudinal strain applicable for long wires. Now let us talk about volumetric strain. Now in volumetric strain, the change in volume is large. So change in volume upon original volume, and this is for larger bodies and having larger surfaces. So let's see, like here. Now when you apply this, due to this external pressure, the volume decreases, body gets smaller, it gets compressed. So here the strain is called volumetric strain. And now here, see, what if the stress is tangential?
Now when you apply a tangential stress, इस सरफेस के टेंजेंशियल आपने फोर्स लगाया है, तो नीचे वाला जो बेस है ये फिक्स्ड है, बट ऊपर वाला जो सरफेस है वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा. तो शेप गेट्स डिफॉर्म्ड. यू कैन सी दिस इज द, इस फोर्स को लगाने के बाद नीचे वाला फ्लोर तो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, पर ये अपर पार्ट ऐसे डिफॉर्म होके शिफ्ट हो चुका है. सो इन दैट केस द एंगल थ्रू विच, जिस एंगल से अपर सरफेस शिफ्ट होता है with respect to the bottom, that angle is called shearing strain. We call it shearing strain. And you see, if the length of the sides is L here and the shifting is through distance delta L, the separation between these two surfaces is L and जो शिफ्ट हुई सरफेस है उसका सेपरेशन डेल्टा एल है, तो दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल टू दिस डेल्टा एल अपॉन एल. सो दिस थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल. दिस इज कॉल्ड shearing strain, and this happens when tangential stress is applied. So shearing strain is the angle through which the face of cuboid gets displaced with respect to opposite fixed face, and this is delta L upon L. So now Hooke's law. We have done Hooke's law for springs. It is applicable here also. Hooke's law. Within elastic limits, the strain produced in a body is directly proportional to the stress on it. किसी भी बॉडी पर जितना स्ट्रेस लगाएंगे उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा. सो एंड दैट शुड हैपन विद इन इलास्टिक लिमिट्स. दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी को आपने स्ट्रेच कर दिया है तो उसको वहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद इसको वापस अपने शेप में आ जाना चाहिए. देन वी कॉल इट इलास्टिक लिमिट. अगर उसकी शेप परमानेंटली चेंज हो जाती है तो हम ये कहेंगे कि वो इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर चुका है. सो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और स्ट्रेस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट E इनटू स्ट्रेन. Now this constant E is equal to stress upon strain, and the constant is called coefficient of elasticity. This constant is called coefficient of elasticity. And depending on the type of stress and strain, we have three different types of coefficients of elasticity or modulus of elasticity. So let us begin with Young's modulus. Now for a long wire or a rod, we have Young's modulus. So Young's modulus is tensile stress or normal stress upon longitudinal strain. So see अगर आपके पास लॉन्ग वायर है तो उसकी लेंथ में जो चेंज होगा वो दैट इज सीजेबल. लेंथ में चेंज ज़्यादा होता है और बाकी साइड्स में चेंजेस इतने कम होते हैं कि उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो हियर force, external force applied is F here, or restoring force is also F. So stress is force upon area, that is also called tensile stress, and longitudinal strain is change in length upon original length, and area can be pi r square. So stress becomes F upon pi r square. This is pi r square is the area of cross section of this wire, and now r is radius of this wire. And see, the strain does not have any unit, so unit of Young's modulus will be same as Newton per meter square or Pascal, which is unit of pressure. So that is Young's modulus. And greater is the value of Young's modulus, greater will be the strength of the elasticity, strength or elasticity. So like for steel, the value of Young's modulus is much larger than its value for copper or gold. So steel has more strength and more elasticity than copper, right? So now if you have a rubber band stretches to a very long lengths,
and steel does not stretch much. You cannot see the increase in length of a steel wire um, without measurement. So you may tend to say that rubber is more elastic, but no, it is steel which is more elastic. And now let us look at different type of elasticity, that is called bulk modulus of elasticity. Now when the change in volume is large, then we use this one, and here bulk modulus is compressive stress upon volumetric strain. See, when this ball is immersed in this liquid, it is being compressed from all sides. So it is compressive stress, normal stress, and the volume changes. So it is volumetric strain. So bulk modulus is F upon A upon minus delta V upon V. Why minus? Because volume decreases. And then you can rearrange things. This F upon A is pressure in the liquid, and this V goes up, and then you have this. And SI unit same as Newton per meter square or Pascal. Now compressibility, okay. Now reciprocal of this bulk model is called compressibility. So 1 upon B is compressibility. And let us look at modulus of rigidity. So when you apply a tangential force, the upper surface gets displaced, and modulus of rigidity is tangential stress upon shearing strain. It is represented by eta. This symbol is called eta. So eta is equal to F upon A upon theta, or F upon A upon delta L upon L. Same SI unit, Pascal. And now stress strain relationship for a long wire. So here we have a wire. See, just try to understand it. आपके पास ये स्टील वायर है, और यहाँ पर आप स्लोली एंड स्लोली इसके ऊपर आप लोड वेट्स हैंग करना शुरू करते हैं. तो जैसे जैसे आप वेट्स बढ़ाएंगे, इसकी लेंथ इंक्रीज़ होती है और स्ट्रेन इंक्रीज़ होता है. सो यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेस एंड लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है. सो इनिशियली द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ. सो एज स्ट्रेस इंक्रीजेज, मतलब वेट्स आप बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन ऑल्सो इंक्रीजेज. सो ये जो है आपका प्रोपोर्शनल है, तो इट इंक्रीजेज directly and you get a straight line graph. And during this process, up to this point A, during this process कभी भी आप वेट्स हटाने शुरू कर दो, तो जब ये वायर वापस से श्रिंक होती है तो वो उसी स्टेट ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस से पास होती है. तो वी कैन से दैट अगर इस वायर को हम अनलोड करते हैं तो अनलोडिंग के समय भी वो यही पाथ फॉलो करती है, राइट. और जिस मैक्सिमम फोर्स तक स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट. एंड इन दिस प्रोपोर्शनैलिटी रेंज हुक्स लॉ इज फॉलोड. सो ओ से ए तक, फ्रॉम ओ टू ए, हुक्स लॉ इज फॉलोड. O is proportionality limit and OA is proportionality range. Now, supposing कि proportionality range आप 5 किलोग्राम वेट तक था, राइट. अब 5 के बाद अगर आपने यहाँ पर वेट और बढ़ाने शुरू कर दिए, so what will happen when you increase weights further, then stress तो आप कम बढ़ाएंगे but strain will be more. So you get more strain as compared to stress. So you start getting a curve. But during this process also, यहाँ से A से B तक भी अगर आप अनलोडिंग करते हैं तो ये वायर सेम स्टेट से क्रॉस करती है. That means wire regains its original size when you remove all the weights and it passes through exactly same path. Right? Now,
If this B is the maximum stress, जब तक कि ऐसा होता है, then this B is called is its elastic limit. This B is called elastic limit means जब तक वायर वापस अपनी ओरिजिनल शेप तक पहुंचती है तब तक हम उसको बोलेंगे इलास्टिक रेंज. So this whole thing is elastic range and B is also called its yield point. So beyond this अब इसकी elasticity खत्म हो जाएगी. So B के बाद now supposing this initially my proportionality range was 5 kilogram weight, elastic limit आ गई 7 kilogram weight पर, right? And beyond which supposing I put 8 kilogram weight, so what will happen? Now the you are not increasing stress कम बढ़ रहा है लेकिन strain बहुत तेज़ी से बढ़ेगा. और उसके बाद जब आप दोबारा से उसको अनलोड करेंगे तो अब जो वायर है इस पाथ को नहीं फॉलो करेगी. अब वायर जो है डिफरेंट पाथ फॉलो करेगी. दैट मीन्स एट एवरी स्टेज some strain will be left on it, extra strain will be left on it, or finally when the wire is completely unloaded, supposing I went up to say 9 kilogram, so 9 kilogram तक जब मैंने वायर को पूरा 0 किलोग्राम तक कर दिया, पूरा वेट कर दिया, तब भी वायर ओरिजिनल साइज तक नहीं जाती है. वायर जो है परमानेंटली कुछ लेंथ रख लेती है, कुछ स्ट्रेन रख लेती है. So this is called permanent set, and for steel wire it is less than 1%. So that means we can say that wire is permanently stretched. Permanent stretching हो गई और ये elastic limit cross कर चुका है. Now beyond this, अगर आप stress फिर भी बढ़ा रहे हैं, आप इसके ऊपर और weights डाल रहे हैं, तो अब आपका stress जो है, strain जो है और तेज़ी से बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम रेंज पहुंच जाएगी जहां तक कि वो वायर आपका वेट ले लेगा. और बियॉन्ड विच अगर वेट्स और भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इस वायर में अब वायर की थिनिंग शुरू हो जाएगी. इस वायर में यहाँ पर नेक्स्ट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं और वायर की थिनिंग शुरू हो जाएगी तो धीरे धीरे यहीं पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड देन यू रीच द फ्रैक्चर पॉइंट. So the maximum weight that you can hang on it or maximum stress that it can take is called its breaking stress or tensile limit. So this becomes its tensile limit and this is your breaking point where it breaks. So wire literally flows. अब इसके बाद आप stress नहीं बढ़ा रहे हो फिर भी strain अपने आप बढ़ रहा है. जब ये नेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है तो आप स्ट्रेस नहीं बढ़ाएंगे फिर भी वायर अपने आप ही फ्लो होके स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी और वो टूट जाएगा. सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड लेट अस लुक एट इट नाउ. सो फॉर स्ट्रेस स्ट्रेन we show the following points like proportionality range OA. I have explained already. It is a straight line and A is proportionality limit. This A is proportionality limit. Then we have elastic limit or yield point. So elastic limit पर आप कभी भी अनलोडिंग करेंगे तो वापस अपनी पाथ से वापस आएगा, ओरिजिनल शेप गेन करेगा. देन वी हैव लोअर यील्ड पॉइंट जहाँ पर कि ये वापस अपनी शेप तो यहाँ से ये वापस जब वापस आता है तो परमानेंट सेट में आ जाता है और इसके बाद जो है आगे बहुत तेज़ी से स्ट्रेन बढ़ेगा. सो दिस पार्ट, ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, दैट इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन. दिस इज इलास्टिक रीजन एंड दिस इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन. एंड आफ्टर दिस वी रीच द अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और टेंसाइल लिमिट विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेस एंड देन यू रीच द फ्रैक्चर पॉइंट where the wire breaks down. And now its explanation, again the same explanation which I have already given to you. Proportionality range OA. In this range Hooke's law is followed, that is stress is proportional to strain, and up to this point A, when the wire is unloaded at any stage, it passes through exactly same states of stress and strain as during the loading process.
Now Young's modulus is given by the slope of the graph. Look at this. When we go back, yeah, here. The slope of this graph will give you Young's modulus. You know that y is equal to stress upon strain. So slope of the graph will give you Young's modulus. So that's an important point to note. And now, yeah. Now let us talk about elastic limit or yield point. Now up to point B, elastic limit, when the wire is unloaded at any stage, it passes through exactly same states of strain and stress, and the wire returns to original size. So that's an important point to note. And now yield point from B to C. So beyond point B, when the wire is unloaded at any stage, it does not pass through exactly same states of stress and strain as during loading process. The wire does not return to original size, and a permanent strain or deformity is left in the wire, which can be less than 1%. And ultimate stress limit, which is beyond C. This is point D. So beyond point C, when the stress is increased, the strain increases very rapidly till it reaches the maximum stress, which is called tensile stress. And now fracture point. Now beyond this point D, which is tensile stress, when the stress is increased, necks develop in the wire and it flows till it breaks down. And the materials with greater plastic region are malleable and ductile, like copper, gold and silver. Okay, so that is an important point to note. Say, for different purposes we use different metals. If we have steel, steel will have larger proportionality range and lesser plastic range, right? So steel has more strength, और दैट इज़ वाई आपके डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए एंड ब्रिजेस के लिए वी यूज़ स्टील. बट फॉर सर्टन मेटल्स लाइक से कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, they have more of this plastic region. So more plastic region means they can be beaten into sheet. उसको हम thin sheets में beat कर सकते हैं. बहुत कम metal से हम बहुत long wires can draw कर सकते हैं. So that means they will be more ductile. उनको आप easily shape कर सकते हैं. They can be malleable and ductile. So for such metals, this range will be more. And now let us look at elastic energy. So here, look at it. Now इस वायर को स्ट्रेच करने के लिए इट्स ओरिजिनल लेंथ इज एल. यहाँ पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है, ये इसकी लेंथ है. जैसे जैसे आप इस पर फोर्स लगाते जाएंगे इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है. सो बाय टू स्ट्रेच इट, इसको स्ट्रेच करने में सम एक्सटर्नल वर्क इज बीइंग डन. ये जो एक्सटर्नल वर्क है दैट गेट्स स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड जब आप इस एक्सटर्नल फोर्स को हटा देंगे तो ये वापस अपनी लेंथ में आता है. सो लेट्स जस्ट सी हाउ वी डू इट. सो द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर gets stored in it as its elastic potential energy. So we are going to find out this work done. Now look at it. When there is no force applied on it, it has its original length L. So here force is 0. अब इस फोर्स पर आप slowly and slowly weights बढ़ाएंगे, stress बढ़ेगा, strain बढ़ेगा, till you reach the final force. Sorry, this has to be F2. This F2 is equal to F. Here it is F2, F2 is equal to F. So the final force applied here is F. So the force increases from 0 to F, right? Look at it here. To increase the length of wire through delta L, the force increases from F1 is equal to 0
तो F2 इज इक्वल टू F। सो फोर्स को हम ग्रेजुअली 0 से F तक इंक्रीज कर रहे हैं। सो द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इज 0 प्लस F अपॉन 2, that is F upon 2. So average force is F upon 2. Now work done is force into displacement. So average force, displacement is delta L. So half F into delta L. Now we will divide this F by A, look here, and delta L by L, and multiply by A and multiply by L. So आप AL से divide भी करेंगे, multiply भी करेंगे. This F upon A, force per unit area, is stress, and delta L upon L is strain, and A into L, area of cross section of this wire into its length, is its volume. So the work done is equal to half stress into strain into volume, and by definition this work done is potential energy, elastic potential energy. So we get elastic potential energy is half stress into strain into volume. And then we have another term which is called energy density. Now energy density is energy stored per unit volume. So इस वायर में energy density कितनी है? That will be its energy stored per unit volume. So divide by volume on both sides, you get energy density as half stress into strain. And now let us take a simple numerical problem. It's a very simple problem. A 2 meter long wire is stretched through 0.20 millimeter by hanging 5 kilogram weight. Calculate the stress, strain and Young's modulus of wire if its diameter is 2 millimeter and acceleration due to gravity is 10 meter per second square. And now you can see. Now let us write whatever is given to us. So original length is 2 meter, change in length is 0.2 millimeter, convert it to SI unit. So this becomes 2 into 10 to the power minus 4 meter. External force applied is 5 kilogram weight. So convert it to SI unit, that means multiply by G and you get 50 Newton. So applied force is 50 Newton. The diameter is 2 millimeter. So radius is 1 millimeter or 10 to the power minus 3 meter. So the area of cross section of the wire is pi r square, that is 3.14, and square of this is 10 to the power minus 6 square meter. So area of cross section we have. And now stress is force per unit area. Force is 50 Newton. Area is this much. And you get 15.9 into 10 to the power 6 Pascal. Strain is delta L upon L. So delta L is 2 into 10 to the power minus 4. L is 2. That is 10 to the power minus 4. And strain does not have any unit. Now Young's modulus is stress upon strain. Stress upon strain. So this upon this, when you do it, you get, I have approximated it. So 1.6 into 10 to the power 11 Pascal. So this is the value of Young's modulus. Pascal or Newton per meter square. So very simple problem. And one more problem. Okay. Estimate the maximum height of a mountain on earth if the density of rock is 3 into 10 to the power 3 kilogram per cubic meter and elastic limit of rock is 30 into 10 to the power 7 Pascal. So आप सोचो कि ये रॉक है, रॉक के सरफेस पर एक माउंटेन है और इस माउंटेन की मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी हो सकती है. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रेशर दैट दिस रॉक कैन टेक and that maximum possible pressure is given to be this much as its elastic limit. Now see rock आपको इस तरीके से conical shape में हो सकता है, mountain जैसे भी होंगे, but let us assume that it is a cylinder. For the sake of simplicity we are treating it as a cylinder and we are taking its density to be uniform. So let us see now. So the density of rock, जो माउंटेन की डेंसिटी है 3 into 10 to the power 3
kilogram per cubic meter. Elastic limit of rock, that means maximum pressure that it can take is this much. So maximum pressure on the rock is rho gh. Pressure is equal to rho gh, this relation, and this is equal to this much. So just change the side, and h is equal to pressure P, which is the elastic limit, upon rho into g. So put the value of this, and let us take g as 10, acceleration due to gravity. Simplify, it comes out to be 10 to the power 4 meter, that is 10 kilometer. So the maximum possible height of a mountain can be 10 kilometer, and the height of Everest is 8 point something like 848 kilometer. So with this, I come to the end of this video. I hope that it is useful to all of you. Thank you for watching it.